Hi, this is Riya Mandal and the Assistant Professor of HIT, Kolkata Institute of Technology. Here I am presenting the very important topic. I know that everyone's, and it is for function and pointer in C. And I know that most of the students are very afraid of this topic, function and pointer. And it's not afraid of that topic. Please don't be that. It's very easy, and today I will be clear. Okay, of that topic. So function and pointer. So what is function? Anybody has any idea? Why we have used the function? First, we have to come to the point that हम function को क्यों use करें? Function is actually it's like a building blocks. देखो basic building blocks. Okay, why basic building blocks? Because suppose you are adding two numbers a and b, you are giving a is 10, b is 20 normal. So in the C program we are writing that hash include stdio.h. It's like normally hash include wala line, then int main wala line ran. Suppose it's coming int main. So whether int main we are giving input a and b. Suppose a is 10 and b is 20. Suppose a is 10, b is 20. If you are adding these two numbers, whatever the command will be, sum you have to give sum equals to 0. Samely int ab in sum equals to 0. I'm just shorting this just to make you understand what is function. Sum equals to a plus b, and the addition will be done, and you will have the result 30 in your output, right? So if you have to do this summation 10, 40, 30, 50, 100 times, so whatever you have to do, you have to write the same code again and again. Is it possible? If you have to this you have to do the sum 100 times, 100 times you will write the code. Is it possible? Never possible, right? So for this problem we are creating function. That's why we have not reuse the code again and again. Just we will write the basic building blocks or a code, and it will be automatically how many times we will be calculated, how many times we have to do the same thing, it will be done just writing the block of codes or block of things. Got it? So what is function? A large program, a large C program is divided into basic building blocks called function. Okay, C function contains set of instructions enclosed by second bracket open close, which performs specific operations in a C program. Actually, collection of this function creates a C program. Now, next slide. Use of function. I have already told you that not using a code or not reuse a code or not writing a code again and again. To minimize our writing of code, we are using function that has been already given here. Okay, next slide. So function has been actually created three parts. Function has been created into three parts. How to make a function? The main things is here how to make a function. हम लोग फंक्शन को कैसे बनाएंगे? फंक्शन आप तो बहुत बोल रहे हैं. You are thinking right कि मैम इतना फंक्शन बोल रहे हैं, फंक्शन तो वो बनाते कैसे हैं? Yes, now I will be telling you that what is how to make a function. Function में there are three main important things. I have write here. You have to write function declaration. Function declaration. What is function declaration? Because if you are creating a function, you have to declare the function now. So function declaration is the first part, second part, and the most important part, calling. Because that calling, if you are like reusing the code 120
300, 400, 500, 1 crores time, you just have to call it and it will be just doing the same thing again and again. How many times you want actually? Definitely. And the third thing is function definition, because you have to here the definition part actually do the main calculation. Function definition in the creation part, it is, you can shortly you can just write creation part. क्रिएशन पार्ट कि सपोज अब बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग जब बनाने के लिए आपको बिल्डिंग के बाहर का स्कीमा आपको ड्रॉ करते हैं ना कि बिल्डिंग को कैसे बनाए, ड्राइंग, तो यू कैन टेल दैट फंक्शन डिक्लेरेशन द ड्राइंग, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करता है, कैसे बनाता है, ये एक स्ट्रक्चर, you can tell that it's a structure. Next, function declaration is a structure, function call is a main calling, अरे बलवा बुलाओ, कितना बार बुलाना है, बुलाओ, that is function calling, ठीक है. And definition means अरे बाबा क्या काम करना है, काम तो बोलो, what function you have to do. Suppose you are adding 10 times, तो addition वाला जो part है वो इसमें होगा, that is you can shortly write that it is a calculation part. It is a calculation part. तो ये अगर तीनों चीज आपको अच्छे से आ जाए तो फंक्शन कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, नेवर. The three things of the function is construction, or you can tell that it's creation part, जिसमें आपको फंक्शन को कैसे बनाना है उसको डिक्लेयर करना है. The next thing function call, and the third one is calculation part or function definition part. Okay, next slide. Okay, so that अभी हम लोगों को अभी we have to came to know that how to create the function definition. Okay, so hash include वाला part you just do by yourself, that hash include stdio.h whatever dot h int main की पहले. So function कहाँ पे बनते हैं, where the function has been made, the function definition, it is called function definition. It has been made before int main. ये दिमाग में घुसा लो कि function construction means जो आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो बिल्डिंग को जो बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन आपको बाहर में करना होगा, प्रोग्राम के अंदर नहीं. कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट बाहर में होना चाहिए. तो मेन शुरू होने के पहले जो 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 जगह है उसमें हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है. कैसा कंस्ट्रक्शन है वो तो अभी मैं बोलूंगी. देखो, function constructions is actually made up with return type. Return type is two types. One is int, another is int means it will be a return type ना, int का return 0 आता है always. So int, and the next one is void जिसका कोई return type नहीं होता, right? So int or void will be merged. So if we are creating a function sum, you are doing sum because we were doing the same program. So int or void, whatever you want to use. I am using here int, suppose, ठीक है, return type. Int int sum, function name. Here you have to declare function name. Return type, the format you just note it down, return type. After that function name, after that argument list. Argument list means उसमें क्या क्या डेटा होना चाहिए. सम के लिए क्या क्या डेटा जरूरी है बोलो. What are the data, minimum data required for adding two numbers? Yes, definitely two numbers होना चाहिए. Two numbers are there. So we will be write int a comma int b. Yes, and bracket close, the semicolon must be there. So that is the construction of a function. You have to properly note it down that how to make a function first. So this is the construction part, and that is called function definition. Clear? So next point is function calling. So whether our program is summation of two numbers. So hash include stdio.h. Now we are making the function. Now making the function int sum, bracket int a int b, bracket close, semicolon, definition part complete. Now we will come to the
मेन फंक्शन, सी मेन फंक्शन के अंदर ये वाला कॉलिंग पार्ट विल बी डन। सो मेन फंक्शन के अंदर कॉलिंग होगा, तो कॉलिंग के लिए क्या होगा, द मेन कंस्ट्रक्शन विल बी डन हियर, हियर द कॉलिंग विल बी डन हियर। तो कॉलिंग करने के लिए द मेन फंक्शन, within this main function the second bracket, I have already opened the second bracket. So here the main program is to calculate two numbers. So for the calculation of two numbers, I am giving, suppose this number and this number will never be same, okay, because within the int main the number that we are giving, that is actually the calculation, वो ही एक्चुअली कैलकुलेशन करके आउटपुट में आएगा। सपोज इंट x कॉमा y कॉमा सम इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक समेशन होना चाहिए ना सम के लिए, सो सम इक्वल्स टू 0 नॉर्मली होना चाहिए। तो ये कर दिया। अभी प्रिंटफ स्कैनफ पार्ट इज अंडर योर्स। प्रिंटफ स्कैनफ मींस आपको दो नंबर को इनपुट लेना होगा। प्रिंटफ के लिए एंटर x y, two number are normally, and scanf में परसेंट डी एम्परसेंड ऑफ x एम्परसेंड ऑफ y, वो पार्ट तो वो आपके पार्ट है। चलो अभी हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, इसमें आएगा अभी कॉलिंग वाला पार्ट। व्हाट आर द कॉलिंग वाला पार्ट? कॉलिंग के लिए यू हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट फंक्शन नेम विद इन ब्रैकेट आर्गुमेंट लिस्ट। फंक्शन नेम क्या था, इसमें कोई डेटा टाइप नहीं आएगा, कोई प्रोटोटाइप इसमें यूज नहीं होगा, ओनली फंक्शन नेम। वेदर वी आर कॉलिंग द फंक्शन, ओनली फंक्शन नेम। फंक्शन नेम इज सम, we have created the function sum bracket, इसमें क्या आएगा x comma y, because we have made this two numbers x y, so x comma y bracket and normally semicolon. This part is actually, it is called calling. How many times you want to sum? It's 10 times, 20 times, 30 times, 40 times, how many times? This is that part, that whether we are calling it, it will go to the function and starting the calculation part. Now calculation part has not been done because it has been, we have give you the point that in the third part the calculation will be done. So whatever the third part will be, here main जब शुरू किया तो main को तो हम लोगों को end करना होगा with return 0 bracket close, main function completed. Now the third part will become, that is function declaration part. What are the function declaration? The function that we had made, the construction that we had made before made, that is samely copied in the function, I mean function declaration part. Same copy कैसे होगा? int, normally जो int है वो int इसमें भी यूज होगा। int samely sum, the sum that we have created, sum, you just write sum bracket open, samely int a int b, right? Int a comma int b comma, the thing is all will be copied except that semicolon. That semicolon will be never used in the function declaration part, but except a semicolon you can copy all of the elements, all of the things that you have used in the function definition part, means before starting the function, the construction part में जो किया था वो ही सेमली इसमें फुल कॉपी हो जाएगा। ओके, गॉट इट? अभी क्या होएगा, a and b all are there, इसमें एक c होना चाहिए, तो int c ले लो, इसमें एक c equals to 0, c equals to a plus b हो गया। Now you just print the c, printf output or the sum of two numbers, whatever, ये वाला printf वाला पार्ट आप कर लीजिए। नेक्स्ट परसेंट डी एंड इसमें c को सिर्फ प्रिंट करना होगा c, ओके, एंड दैट इज योर प्रोग्राम हैज बीन डन। बट व्हाटएवर आई हैव टोल्ड दैट इट इज int means इसमें प्रोटोटाइप होना चाहिए, प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप int है means it will be closed with
return 0. Never forget that if you are using the prototype int always closed with 0. If your prototype was void, there was no return type. Okay, got it? So this is how we are making the function. In the some examples, in the next some slides, I will be explain how we have created the function and how it is working. Okay, next slide. Okay, so this is a simple example. I had given you the example that is थोड़ा complex है. Simple में समझो. देखो void message I have used. Void means no return type. I have already told you. Int में एक नॉर्मल मैसेज हम लोग क्रिएट किया क्या कि कॉल कर दिया, डायरेक्ट कॉल कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, सिर्फ मैसेज प्रिंट करने के लिए. मैसेज कॉलिंग फंक्शन कॉल वाला पार्ट, फंक्शन क्रिएशन वाला पार्ट, वॉइड मैसेज. ओके, मेन के अंदर क्या हो रही है, फंक्शन कॉल हो रही है, उसमें अंडर द मेन क्राई एंड यू स्टॉप द मोनोटोनी, देन रिटर्न 0, देन वॉइड मैसेज. क्या देखो, जो वॉइड मैसेज इसमें था वही फुल्ली प्रिंट हो गया. इसमें सेमीकोलन यूज हुआ है, बट सेमीकोलन यूज ना करके ही देखना, ठीक है. सेमीकोलन यूज होता है तो कभी कभी एरर आ जाता है, राइट. So you better you will be like do in your machine, it will be you will do that. Okay, follow the rules. Next, printf smile and the word smiles with you. So how the output are coming, just write there, just see that first whatever it will be void message, first whether you are coming to the int main. प्रोग्राम क्या करेगा, इंट मेन पे फर्स्ट आएगा. इंट मेन पे क्या है, मैसेज कॉल किया हुआ है. मैसेज कॉल के अंदर क्या है, स्माइल एंड द वर्ड स्माइल यू, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, देन द नेक्स्ट मैसेज विल बी एग्जीक्यूटेड. दैट्स द फंक्शन इज वर्किंग. सो दैट इज द another example. Samely how we will be giving this is actually square. एक वैल्यू का, एक नंबर का स्क्वायर लेना है, ठीक है. स्क्वायर मींस एक स्क्वायर का ये कैलकुलेट करना है, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो फ्लोट स्क्वायर फ्लोट एक्स, नॉर्मली द फॉर्मूला देखो, दैट इज अ फंक्शन क्रिएशन लाइन. सेम इंट मेन लाइन, इंट मेन के अंदर दो वैल्यू लेना है. इसमें दो वैल्यू लिया है, आपको दो वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए ना. कैलकुलेशन ऑफ एक, क्योंकि एरिया क्या है, एरिया इज स्क्वायर, एक्चुअली द वैल्यू स्क्वायर. सो printf एंटर सम नंबर एम्परसेंड एम, फंक्शन कॉल में देखो ये कॉल कर दिया, एंड एन क्यों एन लिया है, क्योंकि एक वैल्यू चाहिए. अगर आपको वैल्यू में स्टोर करना है तो यू कैन, अदरवाइज यू कैन नॉट, दैट इज नॉट एनी प्रॉब्लम. ओके, सो फंक्शन कॉलिंग लाइन, सेम फंक्शन कॉलिंग इन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, द वैल्यू, only the value that you have entered you have to given, the value that I have given samely as function. So and the next point is the calculation part. You just look at that point, that float square float of x. देखो इसमें सेमीकोलन नहीं, उसमें कुछ लाइक गड़बड़ हो गया इसलिए सेमीकोलन दिया हुआ है. सेमीकोलन will be not used here. So float of x, float p equals to, मैंने बोला कि स्क्वायर को हमको एरिया को निकालने के, स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर. So px into x, the same value that we have used here, you will be use the same value here, but in the int then there will be, the value will be changed, because this value will be actually calculating the main part. This is the main function. So return p and it will be ended. Okay, now functions, two important things that mostly important for your NET exam, GATE exam, and for university level exam also. That is call by value and call by reference. So call by value and call by reference, to understand this you have to know that this one. So what is actually call by value? जब हम लोग ये वाला प्रोग्राम we were doing, what is this, float of x, what is this, it's a value ना. हमको वैल्यू को बोल के ही तो हम लोग ये वाला कॉलिंग कर रहे हैं. जो कॉलिंग वी आर कॉलिंग, द कॉलिंग वी आर मेकिंग, दैट इज अ वैल्यू, थ्रू अ वैल्यू वी आर कॉलिंग हियर. सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली
कॉल बाय वैल्यू, कि जब हम लोग एक प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, whether we are running a program, we are calling it through a value, that is called call by value. Why it is called reference? किसी से रेफरेंस ले रही है, थोड़ा ठीक है, but not actually. Call by reference means it is calling through an address. It is calling through an address. That I will be discussed later. Call by reference means calling through a value. Calling through a value. इसको बोलते हैं calling through a value. But call by reference, calling through a address. इसका मतलब क्या है? एड्रेस से कैसे कॉल करते हैं? वही तो पॉइंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एड्रेस से कॉल करते हैं. That is called actually pointer. What is pointer? We will be coming to the next point. What is pointer? Then you will like understand it more clearly. Call by value. Call by value तो I have already told you. Sample program. देखो ये A and B that I have already discussed. अगर sum कर रहे हो तो sum में int A and int B there will be two value. That is called call by value because value से हम लोग बुला रहे हैं, value से we are calculating and we are doing all the rest of the programs. But in the times of the point is call by reference. So reference, what is reference? Reference is actually the value stored at an address. Value stored at an address, and that is actually the concept of pointer. So call by reference is actually based on the pointer, and that I will be discussed in next. So you just know that pointer variable is star. To pointing any variable or to define an address of a variable, we are using star. So if we are representing the same number as star A, comma, star B, all will be the address. It signify that it is based on the address of the value. That is actually called by reference. So what will be, you just want to see? Yes. Just check it that same program, same swapping program. Swapping means suppose A, B and we are swapping of these two numbers. What is the concept of swapping? Okay, for swapping we will be used a temporary variable. Suppose, okay, so this is a temporary variable. A equals to suppose 10 and B equals to suppose 20. So we just have to swap the two numbers. Whatever we have to do, first this is a blank, this is a temporary. So temporary में इसको डाल देना है. तो क्या करना है? What will be that? T equals to A. Next one, it is now it is blanked. Now it is blanked. Okay. Now A has been blanked. ऊपर में A is blanked and T में it 10 has comes. Now the next thing is, now A is blank. So A को B को A में डालना है. तो A equals to B. It's a very easy concept. A equals to B क्योंकि 20 अभी इसमें चला आया. अभी कौन ब्लैंक है? B ब्लैंक हो गया. अभी B is blank. So now whatever we have to do, we just have to exchange the two values, na? So this third variable का value we have to put it into B. So it will be B equals to T. इसका मतलब क्या है? The value has been exchanged to each other. So that is the concept. So void swap means that is the creation line that I have already told you that three part creation line. The int A and int B की जगह में क्या बैठा है इसमें? Star A and star B, that is the address. तो पिछले वाला टाइम में हम लोग क्या यूज करते थे? हम लोग यूज करते थे वैल्यू. A का वैल्यू है 10, B का वैल्यू है 20. This value are exchanging using each other. But in this case, suppose here A has been present and the value of A is 10
एंड सपोज B हैज बीन प्रेजेंट एंड B का वैल्यू है 10, इसका एड्रेस सपोज 65524 एंड B का एड्रेस है 65522। सो ये वाला एड्रेस एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ये वाला that is called, ये वाला star it has been used and it is called actually call by reference। so क्या चेंज हुआ है, सिर्फ सेम हो गया, सिर्फ इसमें स्टार आ गया। देखो और नॉट ओनली दैट, ये वाला जो कॉलिंग के टाइम में हम लोग क्या यूज कर दिया, नॉर्मल वैल्यू। ये एम्परसेंड का मतलब क्या है, स्टार ऑलवेज showing that its address, but ampersand is also seemingly showing the address operator। ampersand में को हम लोग address operator को में यूज करते हैं। so ampersand will be used for assigning address operator। so इसीलिए हम लोग देखो इसमें तो स्टार यूज कर दिया, स्टार यूज करने के लिए अगर हम लोग एन को यूज करेंगे it will be not take because it is not a value, it is address। that's why as it is showing the address, as it is showing the address, we have to give ampersand of n and ampersand of n। got it? so ampersand, m and n we have to use। now void swap int star a star b, normally the same thing, whatever I have told you, the same that will be here has been created, samely copied here, samely copied here। only what point will be not used, I have told you the semicolon। देखो semicolon इसमें नहीं यूज हुआ है। and the formula, the main calculation part, swapping का main calculation part just you just put it here and the program has been ended। got it? what is call by value, call by reference, that's very easy, you just have to know what is address and what is value, and that is called actually call by reference। now देखो वैल्यूज, फॉर वैल्यूज कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा तुम वैल्यूज दोगे वैसा ही चेंज हो जाएगा। now coming to the pointer, pointer is a variable that can store the address of another variable। pointer is a variable, suppose I and j, that is two variable, okay। I का वैल्यू is suppose 10, j का वैल्यू is, j का वैल्यू अभी कुछ नहीं है, i का वैल्यू 10 है एंड i का लोकेशन है 65524। ओके, सो pointer is a variable, pointer is a variable, suppose star j, pointer is a variable that can store, what store, address of another variable। इसका मतलब क्या है, pointer star j will store 65524। बहुत गड़बड़ हो जाता है ये पॉइंट, अच्छे से समझो। देखो पॉइंटर इज अ वेरिएबल, j स्टार j इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल में 10 स्टोर हो रहे हैं, बट j इट्स नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, इट्स अ स्टार j, इट्स अ पॉइंटर वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, j में i में जो एड्रेस स्टोर है, i में जो एड्रेस स्टोर है, i में कौन सा एड्रेस स्टोर है, 65524 स्टोर है, उसका एड्रेस को ये कंटेन कर रहे हैं। I is normally 10, I के अंदर the value is storing 10, but j is not a normal variable, j is a variable that can store the address of, किसका एड्रेस, another variable। कौन another है, I another है, ठीक है। so j is storing the address of another variable and that is actually pointer। so देखो पॉइंटर बहुत सारा होता है, बेसिक होता है, एरे पॉइंटर होता है, डायनेमिक पॉइंटर होता है। पॉइंटर कैसे यूज होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड देखो ऐसे वी, जैसे हमने आई एंड जे किया, दैट इज आल्सो वी एंड पी करके सेम की एग्जांपल इट हैज बीन प्रेजेंटेड। सो दैट इज माय टॉपिक। थैंक यू सो मच।